हेलो हाँ प्लीज स्टार्ट करें मैडम। हेलो मैडम आपका कुछ उसमें इशू है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, उनकी आवाज तो आ रही है, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा, हाँ, वार्म उनके वेलकम all learners and resource person, Dr. Arvind Jha sir. I am inviting Dr. Arvind Kumar Jha sir for today's lecture. Welcome sir. And Thank sir, you. a request हम्म by our audience, हम्म ये लोग चाह रहे हैं कि बाइलिंगुअल हो प्रोग्राम तो ज्यादा अच्छा है, बहुत से हिंदी भाषी लोग भी तो हैं। मैंने कल तो पूछा था आपसे, तो आपने ही कहा था कि बिल्कुल मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई बाद बात नहीं, में कोई बात नहीं, आई डेफिनेटली। बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया तो मुझे लगा कि कोई बुराई नहीं है जी। ओके ओके, ओके, थैंक यू ठीक सर। ठीक ठीक। आप लेकिन बने रहिए उस पे प्रमोद जी। जी सर, मैं हाँ पूरे टाइम में सुन रहा हूँ प्रोग्राम। हाँ, उसका इसलिए कि अच्छा, तो अब क्या करें कि कल जो हमने जहाँ तक रुका था पहले उसको खत्म कर ले जी और सर। फिर उसके बाद नैरेटिव इंक्वायरी शुरू करें, यही ना? जी तो सर। अभी 5:30 हो रहा है, तो जी आप मुझे एक मतलब कि वो कह दीजिएगा जब बीच में आपको लगे, क्योंकि मैं जी चाहता हूँ कि आज का जो टॉक है 2 घंटे में जी 45 मिनट इसमें लगाऊं और 1 घंटा 15 मिनट उसमें लगाऊं, जी या सर। आधे घंटे इसमें लगाऊं, और जैसा भी आपको ठीक लगेगा। जी तो मुझे 6:10 पे आप थोड़ा सा रिमाइंड कर दीजिएगा, जी ताकि सर। मैं इसको कंक्लूड कर लूं और जी मैं फिर चला जाऊं नैरेटिव इंक्वायरी के ऊपर, जी जो हमारा जी सर। सेशन है। ठीक जी है? सर। जी वेल, जी so what I'm going to do today, friends, I'm going to, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए इजाजत दीजिए प्रमोद जी। प्रमोद जी, हेलो। प्रमोद सर, सर, मैं यहाँ से कर चुका हूँ। नहीं, यहाँ पे आ रहा है कि हाँ, अब हुआ है, अब हुआ है, अब हुआ है, ठीक है। तो well, so let me complete yesterday's right, and then I'll move over to narrative inquiry. Anyway, so my understanding is this, that yesterday we closed our discussion that all paradigms that exist or that we have constructed, they are nothing but the uh, product of the human mind's construction. So paradigms as human construction, we have already discussed about this, and I'm not going to discuss that. But yeah, as I said, as far as the nature of paradigm and the basic belief system is concerned, it depends. Like as I say, the nature of human being depends on so many factors. Nature of the society and societal behavior depends on so many factors. Similarly, the nature of paradigm, which is generally perceived as basic belief system, and as far as the research is concerned, three broader things, and that is ontology, epistemology, and methodology. We had almost discussed yesterday. Now the question is then, what are the various constituents of the paradigm of research? कि जो research paradigm हमारा है, उसके जितने भी constituents हैं, उसमें से उसके main components क्या है? तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत शुरू में मैं मेथड की केवल बात करता था, फिर मेथोडोलॉजी की बात करता था, और जब मैंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली और कुछ और लोगों के वर्क को पढ़ा, हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ रिसर्च पे बहुत अच्छी पीएचडी की, उनके वर्क को पढ़ा, तो मुझे लगा कि इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और आज मैं कहता हूँ कि एज फार एज द कॉन्शियंस ऑफ पैराडाइम ऑफ रिसर्च इज कंसर्न, इट कंसिस्ट ऑफ ontological assumptions on the one hand plus epistemological assumptions on the other. Then two things you can combine: ontological assumptions along with axiological assumptions, because you know the reality, question of reality cannot be
seen and perceived in isolation, in vacuum. So ethics and ontology go side by side. So ontological assumptions plus axiological assumptions, and when you talk about the epistemological assumptions, that will be the methodological assumptions. So when you combine all the four, then it becomes paradigm of research. Similarly, but as I said, that like you people, I'm also growing. Every day I try to read something new so that something can be added to my existing knowledge. And lately I have developed my interest in rhetoric, that is the language of the research. So now I say, as far as the conscience of paradigm of research is concerned, ये 5 चीजों से कम बनेगा. वो क्या क्या होंगी? Ontological assumptions, axiological assumptions, epistemological assumptions, methodological assumptions and rhetoric. और मुझे लगता है कि अब ये जो rhetoric है, जो language of the research है, वो ज़्यादा important है और इसको भारत के जितने भी करिकुलम हैं, सिलेबस हैं, रिसर्च के और रिसर्च मेथड के, उसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए. और ये सब मिलके पैराडाइम ऑफ रिसर्च बनाते हैं. फाइन. अब कुछ लोगों का ये फीडबैक आया था कि ये बार बार जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी, रेट्रिक, थोड़ा इसको भी समझ लिया जाए तो बेहतर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज दीज थिंग्स हैव बीन डिपिक्टेड इन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस. लेकिन उससे पहले एक बात मैं करना चाहूंगा कि व्हाई ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ रिसर्च, क्यों ही मेरे दिमाग में बात आई कि होनी चाहिए. तो एक चीज मैं बहुत संक्षेप में, जीरो का ग्रिक्स का बहुत अच्छा वर्क है 2004 में, और ग्रेक्स ने इस बात को लिखा भी है. व्हाई डज one's view of knowledge and educational reality relate to social educational research or any social science research? So one view is that the researcher's intentions, researcher's goals, and researcher's philosophical assumptions are inextricably linked with the research they do. जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आप वो नहीं पढ़ाते हैं जो आप जानते हैं, आप वो पढ़ाते हैं जो आप होते हैं, और आपका होने में जो नोइंग एबिलिटी है आपकी, वो आपके बीइंग का पार्ट हो जाता है. ठीक है. तो नोइंग बीइंग का पार्ट होता है, और जब एक टीचर टीचर के रूप में क्लास में जाता है तो सिर्फ नोइंग को लेके नहीं जाता है, वो अपने बीइंग को लेके सबसे पहले जाता है, और उस बीइंग का जो नोइंग है एक सबसेट है. क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बीइंग के लिए बहुत चीज चाहिए, तो उस बीइंग का एक छोटा कंपोनेंट नोइंग होता है. इसलिए जानना तो सब्जेक्ट को जानना जरूरी है, लेकिन क्या लगता है कि कोई मनुष्य सब्जेक्ट को जानता है तो पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा पाएगा. इसीलिए आज ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें हम तो जान लेते हैं, लेकिन हम दूसरे को नहीं समझा पाते हैं कि तुम भी जान लो कि ये क्या है. ओके. तो ग्रिक्स ने लिखा है, ही वांट्स दैट द पीपल हु वांट टू कंडक्ट क्लियर precise research and evaluate others' research need to understand the philosophical underpinnings that inform their choice of, number one, research questions, research methodology, research methods, and above all, मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रिक्स कह रहा है, रिसर्च इंटेंशंस. इन सब चीज को प्रभावित करती हैं आपकी सोच, जिसको कि अगर आप कहें कि एकेडमिक जार्गन में हम कह सकते हैं philosophical underpinnings, right? So once that and he has won this. Therefore, how one views the construct of any social reality, psychological reality, managerial reality, or educational reality and knowledge affects how they will go about uncovering knowledge. आज मैं जब नैरेटिव इंक्वायरी की बात करूंगा तो almost I have 10 to 15 books on narrative inquiry, 10 books at least, right? And I have the collection of more than 100 articles. Okay, yes, some are the paid, some are freely available, but mostly they are not the freely available, highly costly. One article costs $35, sometimes €35. But anyway, if you are passionate about learning something, you pay for that. Okay. So how one views the construct of research reality or social research reality or educational research reality or any reality and knowledge
affects how they will go about uncovering knowledge of relationship among the phenomena and social behavior. Number one, and how they evaluate their own and others' research. जैसे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, पेडागोजी में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये मेथड है, वो मेथड है, दिस है, दैट है। कहीं भी हम क्वालिटेटिव मेथड पेडागोजी में है नहीं, पता है आपको? क्या क्या मेथड का हम नाम लेते हैं? लेक्चर मेथड तो सबसे पुराना है, उसके बाद इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिसिस, सिंथेसिस, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने किसी भी इंडिया के किसी भी करिकुलम में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ या इससे पहले जिस 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मैं सिर्फ एक टीचर के रूप में ही रहा, वहां तो हेड एंड डीन के भी रहा, जहां मैं ऐसा कर सकता था। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उस तरह के पेडागोजी का नाम ही नहीं है उसमें। जैसे भी एक पेडागोजी है, नैरेटिव पेडागोजी, है ही नहीं। यानी जब वेस्ट चीजों को करके छोड़ देता है, जैसे कि पहली आदत है, तब हमारे पास वो पहुंचती है और हम लोग सोचते हैं और हम उसको यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो क्यों वहीं होता है, यहां क्यों नहीं होता है? वहां क्यों फ्रीडम है कि इस तरह के टॉपिक्स हो जाएं और वहां नहीं है? क्योंकि आज दिन भर मैं नैरेटिव इंक्वायरी को देखता रहा, तो मैं ओवरलोडेड हूँ नैरेटिव इंक्वायरी के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से। तो वो बातें बार बार आएंगी मेरे दिमाग में जब तक कि मैं उस पे लेक्चर शुरू नहीं कर देता। राइट? सो हाउ दे इवेलुएट देयर ओन एंड अदर्स रिसर्च, ये सारी चीजें आपकी फिलोसॉफिकल स्टैंड से प्रभावित होती हैं, अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली बोथ। और इसीलिए ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ रिसर्च को समझना, जानना, पढ़ना बड़ा जरूरी है। आपको ग्रीक्स की बात बताई जी, 1994 में वो लेके आया था क्रॉटी। अगर आप ग्रीक्स तो खैर बाद में लेके आए हैं, लगभग शायद 2004 में आया है क्रॉटी। Crotty argues that researchers can choose which stage to begin at. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि start with ontology, come to the epistemology, then the methods and then the methodology. No, इवन आप मेथड और मेथोलॉजी आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप जरा सोचिए उसके ओंटोलॉजी के बारे में या उसके एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। गो एंड फोर्थ हो सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में तो यही होता ही है, एक कदम आगे बढ़ते हैं और फिर एक कदम पीछे आते हैं। रिट्रोस्पेक्शन के बिना तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता ही नहीं। और क्रोटे ही नहीं कहता है, अदर ऑथर्स हैव आल्सो स्ट्रेस द रिसर्च इज बेस्ट कंडक्टेड बाय आइडेंटिफाइंग योर ontological assumptions first. बात सवाल है ना कि आखिर उस फिनोमेना को आप अध्ययन करना चाहते हैं, क्या अध्ययन करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल है कि उस फिनोमेना की रियलिटी क्या है, पहली बात। और उस फिनोमेना की जब हम जान जाएं कि किस रियलिटी को हम जानना चाहते हैं, तो उस रियलिटी को कैसे जानें? क्या उस रियलिटी को जाना भी जा सकता है या नहीं, ये एपिस्टेमोलॉजी डिसाइड करता है। और जब एपिस्टेमोलॉजी आपको बता दे कि हाँ जाना जा सकता है, तब एपिस्टेमोलॉजी आपको गाइड करेगा कि कैसे जाना जा सकता है, वो मेथोलॉजी होता है। और कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए जो टूल्स टेक्निक का आप उपयोग करेंगे वही मेथड हो जाता है। इसलिए आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम द फर्स्ट वन हु इज सेइंग दिस, मेनी पीपल हैव सेड दिस, लेकिन पहले लोग बात करते थे और रिसर्च का वो हिस्सा नहीं बनता था, अब रिसर्च का हिस्सा बनने लगा है। मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक आयरलैंड की फैकल्टी है, जिसको मैं शी इज बेसिकली कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, बट शी इज कंडक्टिंग रिसर्च एक ओपन प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं, तो एजुकेशन नेचर है, एंड आई एम हर ऑफ शोर एडवाइजर। तो हम ऑनलाइन ही उनको करते हैं। सर जी सर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक्सक्यूज मी। एक्चुअली आप 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आवाज माइक पे काफी आवाज आ रही है। मेरी तो जी नहीं, एक मेरे नहीं पास तो कुछ भी नहीं है। और नहीं, जैसे आप एक नेक में बैंड यूज कर रहे हैं, है ना? अच्छा, नेक बैंड तो है, इसको हाँ ऑफ कर, तो चलिए मैं इसको हाँ ऑफ करता हूँ। जी ठीक है जी, ठीक है ठीक थैंक यू सर, ठीक मैनी मैनी थैंक्स टू ठीक ठीक ठीक। अब मेरी आवाज में थोड़ी क्लैरिटी है? सर, बिल्कुल। है तो ठीक है, तब मेरे एंड पे हो सकता है कि वो इंटरफेयर कर रहा होगा उसका सिग्नल इसके साथ। जी जी एनीवे कोई बात नहीं। तो देयरफॉर मैं कह रहा था कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन,
देयर हैव बीन, लेकिन होता था कि क्या होता है कि कई बार वो उसके डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाता है। प्रश्न तो हम खड़े करते हैं, लेकिन हमें तरीका पता नहीं होता है, तो हम उसका हिस्सा नहीं बना पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बता पाया कि व्हाई ओंटोलॉजी एंड एपिस्टोलॉजी ऑफ रिसर्च इज नेसेसरी, पर्टिकुलरली इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दो बातें और मोटे मोटे पे शेयर करना चाहूंगा कि रिसर्च इज बेस्ट डन बाय people say, and researchers have said, setting out clearly the relationship between what a researcher thinks can be researched। कल भी मैंने कहा था आपसे, यानी क्या रिसर्च किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि पर्सनल सोर्स के आधार पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे सारी रिसर्च आप नहीं कर सकते। इसका मतलब हिज और हर ओंटोलॉजिकल पोजीशन। आई रिपीट, that research is best done by the setting out very clearly the relationship between what a researcher thinks can be researched, linking it to what we can know about it, कि क्या किया जा सकता है और फिर उसको कैसे जाना जा सकता है। वही उसका एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस पोजीशन होता है। क्या किया जा सकता है, किस वास्तविकता को पकड़ा जा सकता है, वो तो हो गया ओंटोलॉजिकल पोजीशन। और उस पोजीशन को कैसे जाना जा सकता है, जहां भी जानना आएगा, हाउ टू नो इट आएगा, वही उसका एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन होगा। और तीसरा, हाउ टू गो अबाउट इट। अब ये तो पता चल गया इसको जाना जा सकता है, ऐसे करेंगे जाने। अब जानने के लिए करें क्या, what next? So how to go about acquiring it is a whole methodological approach. That is a methodological approach. So you can begin to comprehend the impact of your ontological position can have on what and how you decide to study. Moreover, your ontological assumptions inform your epistemological assumptions, जो कल भी मैंने कहा था, which inform your methodological assumptions, and these all give rise to your methods employed to collect the data. हो क्या रहा है, क्या करते हैं हम, मैं भी, आप भी, सब हम डेटा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही डाटा कलेक्ट किया जाता है। कल मैंने आपसे कहा था कि क्यों क्वेश्चनर एक आस्किंग क्वेश्चन नहीं, या क्वेश्चन शेड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरव्यू शेड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चनर क्यों फ्रॉड है, आपको बताता हूं। तो देखिए, एक स्टडी हुई है दुनिया में, उसने बताया है कि मनुष्य बोल तो सकता है सब कुछ, लेकिन जब वो लिखता है या इवन बोलता है, तो क्या बोलता है या क्या लिखता है पता है आपको? वो वही बोलता है या वो वही लिखता है जो एथिकली उस समाज के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो एथिकली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो आपको लिख के नहीं देगा, वो बोल के नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आप करप्ट प्रैक्टिसेस पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक, आपने एक क्वेश्चन बनाया और आपने पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में करप्शन है, तो कहेगा हाँ। क्या आपको लगता है कि भारत में करप्शन है, तो कहेगा हाँ। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में करप्शन है, तो वो कहेगा हाँ। क्या आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसमें करप्शन है, कहेगा हाँ। क्या आपको लगता है कि ज्यादातर लोग जो आपके साथ काम करते हैं वो करप्ट हैं, वो कहेगा हाँ। फिर सवाल पूछिए, क्या आप करप्ट हैं? क्या लगता है आपको, क्या आंसर आएगा? कभी भी कोई नहीं कहेगा, चाहे वो कितना भी करप्ट हो, कि वो करप्टेड इंसान है, उसने कभी घूस लिया है या उसने पैसे के लिए कुछ गलत काम किया है। क्वेश्चनर में नहीं देगा। अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी रियलिटी है जिसके लिए बहुत लॉजिक, बहुत एपिस्टेमोलॉजी, बहुत एंटोलॉजी की जरूरत नहीं है। सामान्य सी बात है, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं कि जो कुछ उसने क्वेश्चनर के थ्रू आंसर दिया है वो सही ही दिया है, जबकि हकीकत है कि क्वेश्चन के माध्यम से लिख के जो मनुष्य आंसर देता है वो सही उत्तर, मतलब वो दुनिया की रिसर्च बता रही है, वो 90% फेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एडल्ट्री पे करके देखिए, क्या कोई मनुष्य कहेगा अगर उसका होगा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि हाँ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? हाँ, वो दूसरी बात है कि पॉपुलैरिटी के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए 100 में से एक या 1000 में से एक या लाख में से एक उसकी कोई फिल्म आनी है तो उसको कंट्रोवर्शियल बना देना है, तो वो करेगा नहीं, या किसी, वो अलग बात है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल कर्व की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल ग्रुप में आएंगे वो नहीं कहेगा आपको। उसके दो उदाहरण आपको देता हूं।
जब नया नया मोबाइल लॉन्च ही हुआ था, तो आपको पता होगा 45 रुपये था आउट गोइंग का और 24 रुपये था इनकमिंग कॉल। पहले तो हुआ दोनों बराबर था, फिर बाद में कहा कि नहीं, इनकमिंग को कम करो, क्योंकि आउट गोइंग वाला भी तो पे कर रहा है, चाहे जिस सब्सक्राइबर को पे कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा, देखिए हमने मोबाइल की जर्नी भारत में शुरू की तो कैसे की। खैर हो गई, मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गया, लोग मोबाइल रखने लग गए। और मुझे याद है कि दिल्ली में मोबाइल की कीमत ज़्यादा था क्योंकि टैक्स ज़्यादा और कोलकाता में कम था, तो दिल्ली के लोग बाय प्लेन चले जाते थे कोलकाता और वहाँ से मोबाइल का हैंडसेट खरीद के ले आते थे, जैसे अभी होता है। आपको पता होगा, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझने के लिए हमें क्यों क्वालिटेटिव रिसर्च की ज़रूरत है। एप्पल का प्रोडक्ट इंडिया में महंगा है और यूएई में सस्ता है। आप वीज़ा बना लें, एक दिन का होटल खर्चा कर लें और बाय प्लेन चले जाएं और खरीद के ले आएं, तो भी पैसा बच जाएगा। जबकि एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की इंडिया में। यूएस में से भी ज्यादा सस्ता है और यूएस में उतना ही नहीं सस्ता है। यूएस में अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है। एज ए फुल ब्राइटर जब वहाँ था तो मैंने 2 गैजेट खरीदे थे। आईफोन 7 उस समय लॉन्च हुआ था, तो मैंने वो लिया था और एक आईपैड लिया था। बस ये बात दिखा दीजिए कि सपोज उनको कि आप प्रोफेसर हैं या आप स्टूडेंट हैं। 10% ऑफ इंडिया में नहीं देता है, अब मिलेगा, ऐसा एप्पल ने घोषणा किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हुई है। बट सी, जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई तो क्यों महंगा है? बट फॉरगेट इट, दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट इज कि जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया और एसएमएस भेजा दिल्ली की महिलाओं को, लड़कियां भी थी और महिलाएं भी थी, और वही एसएमएस ये पूछा था कि वुड यू कॉम्प्रोमाइज विद योर सेक्सुअलिटी फॉर करियर प्रमोशन? क्या अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ने के लिए आप सेक्सुअलिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगी? तो आपको ताज्जुब होगा, उस समय की बात कर रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट ही था। 65% पॉपुलेशन का जो रिस्पॉन्स था वो था यस, और 35% का केवल था नो। सुनिए, और जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया इस रिजल्ट को तो लोगों ने रिएक्ट किया। हम जैसे लोग भी थे, क्योंकि हम नए नए एमएड की रिसर्च कर रहे थे, या कर लिया था शायद, या एमफिल का कर रहा था, एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है मुझे। हमने कहा कि ये डेटा गलत है। क्यों डेटा गलत है? क्यों ये रिजल्ट गलत है? आपका जो डेटा कलेक्शन का मीडियम है वो गलत है। ये रिजल्ट एवरेज जो दिल्ली की महिलाएं हैं, मिडिल क्लास, उसकी माइंडसेट को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो कहा वो कैसे? मैंने कहा 2 काउंट पे। एक, आपने एसएमएस से ये सवाल पूछा, तो एसएमएस से जवाब देने का पैसा जिसके पास होगा वही दिया होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास मोबाइल होगा वही दिया होगा। तो उस समय जब अभी इंट्रोड्यूस हुआ था और इतने महंगे महंगे सेट्स होते थे, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन केवल हाई इकोनॉमिक स्टेटस के महिलाओं से पूछा गया। इसका मतलब ये जवाब उनके हैं, ये जवाब एवरेज के नहीं है। और मैं आपको बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, मैं किसी भी रिसर्चर से कोई भी रिसर्च की टेक्निक को लगाता हो, स्टैटिस्टिक्स की, दुनिया का कोई सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं हो सकता है। ये हमने एक मिथ जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि कल भी मैंने कहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैराडाइम की वो आवश्यकता है। एंड इन ऑब्जेक्टिव पैराडाइम ऑफ रिसर्च ये आवश्यकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये उसकी आवश्यकता है। तो हमने मान लिया कि ओ हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो कहाँ कैसे होगा सोशल साइंस में? बताइए आप। आपको लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बैलेंस कर लेने से सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है? मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, आई हैव माई ओन लॉजिक। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं, क्यों मैं कहता हूं कि क्वेश्चन ऐड के थ्रू जो आंसर नहीं सही आता है। बीबीसी उर्दू सर्विस ने एक प्रोग्राम किया, कहीं से उसको पता लगा होगा, आपको पता ही है, जर्नलिज्म तो होता ही है, कि पाकिस्तान के गर्ल्स हॉस्टल में होमोसेक्सुअलिटी राइज पे आई। बहुत पहले की स्टोरी है, बहुत पहले की। सर, स्टोरी स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा। एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है वो साउथ से भी बहुत ज्यादा है और नॉर्थ से भी।
तो आपने ही अगर कहा है बाइलिंगुअल रहने के लिए। सर अगर पलड़ा दोनों का थोड़ा भी इधर उधर होता Oh, so है anyway, so you मैं keep in mind. So let me तो allow to go in हाँ English and हाँ certain things. अगर किन्हीं को लगता है तो जी प्लीज आप मैसेज लगातार भेजते रहिए उनको. तो जी that thing I would like to तो explain अगर in अगर अगर in पॉसिबल हो तो आप मतलब दोनों भाषाओं में थोड़ा चलिए मैं थोड़ा कोशिश थोड़ा कर रहा. थोड़ा जी होता नहीं जी है, देखिए जब गियर शिफ्ट होता है ना, गियर I'm चेंज I'm होता है. I'm I'm understanding. And particularly if you are equally competent in both the language as far as the spoken power is concerned. अगर ये लोग नहीं होता तो आपने आप शिफ्ट होता. But anyway, so the जी story goes like this, that BBC published a result regarding homosexuality among the girls in the girls hostel of Pakistan. So the Pakistan government, objected to that, and Pakistan government asked BBC to produce the evidence. Unfortunately, unfortunately, they had no solid evidence. They verbally asked. That's it. Next time, what they did when they were asking this question, okay, when their, researchers to collect the data started visiting one hostel after another, they asked the similar question. My students must be knowing. I all every time I, cite these two examples. Uh, so they asked the question: do you think that the homosexuality is prevalent among the girls in the higher education institutions hostel in Pakistan? Majority of them said yes. And when the second question was asked, and what they did, they said, if you don't mind, I would like to record your statement. So they started recording the statement. Okay. So majority of them said, no, I haven't done. I have never. No. Now the question is, so what they did, one hostel out of 100, they asked this question 90 students individually, and none accepted this. What does it signify? It signifies that the data that you collect through the questionnaire, if those questions are ethically not correct, ethically not acceptable in the society, no individual will give you response correctly. Always remember that. Always remember that. Now, and that's why I'm saying you need to ask once your questionnaire is ready, okay, or whatever format, whatever tool, you ask your ontological question. Do you think that these questions are capable to capture the reality of the phenomena? क्या इन प्रश्नों के माध्यम से हम जिस फेनोमेना का, जिस अपघटन का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी वास्तविकता को पकड़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे? Now, coming back to the methodological framework, qualitative researchers make their values explicit in their study, and also called researcher positionality. What is your position? That's why I always say to my researcher scholars, no matter however the great scholar is, this is my position. This is my definition. I would like to share one example with you. I was presenting one paper in Mansfield College, Oxford, regarding creativity in mathematics education. So one of the psychologists from US university asked me, Dr. Jha, there are 64 definitions. So another one corrected, no, there are 124 definitions of creativity. Which definition you buy? That was my paper, my standing. I said, no, I don't buy any definition. For me, and my definition of creativity is construction is a creativity. So keeping that in, because I consider myself a constructivist thinker, so constructivist epistemologist and constructivist pedagogue, I have my right to take my own stand, my own position. So for methodological framework, researchers' positionality is a very, very important, friends. And therefore, I would like to state here that the research writing needs to be personal. ये बिल्कुल गलत है कि आप नहीं लिखेंगे पर्सनल. क्वालिटेटिव रिसर्च में तो आप पर्सनल ही लिखिए, एंड लिटरेरी इनफॉर्म,
जैसे मैं बताता हूँ, परसों मैंने एमईटी के फैकल्टी के लिए, उनके पास भी 100-150 लोग जुड़े थे, एक लेक्चर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो फ्रेज जिस भी फैकल्टी ने लिखा। इसलिए नहीं अच्छा लगा कि उसने मेरी तारीफ की प्रेजेंटेशन की। आई वाज टॉकिंग अबाउट on pedagogy that is called positive pedagogy, taking a clue from the positive psychology. From the reference point, my reference point was the constructivist pedagogy. Anyway, let's float in the flow of so and so. I really like that statement. And see, I'm again quoting. So research writing in quality research, as far as the methodological framework is concerned, needs to be personal and literary in form, figurative in form, that it should explain something figuratively, chronological and narrative style, so that it may become trustworthiness and understandable. And don't you think when a writer writes in your own language, when you say you or I, then you become a co-traveler in that journey? खैर, सर आप में से कुछ लोग जानना चाहते थे होता क्या है. So on the screen, what is ontology? What constitutes reality? And how can we understand the existence of that reality? भाई जैसे आपसे कोई जानना चाहे कि what is the reality of being a student? What is the reality of being a professor? Or what is the reality being a researcher? Or what is the reality of existence of God? Or what is the reality of existence of poverty? Or what is the reality of developmental phenomena? So what constitutes reality and how can we understand its existence? That is ontology. कि जिस घटना को आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, उस घटना की वास्तविकता क्या है और वो सच में वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है. इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं पॉवर्टी है नहीं, पॉवर्टी क्रिएट की गई है. मार्क्स भी यही कहते थे. अगर वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अब बहुत सारे मजदूरों ने, मान लें कि अगर सरकार ने जो मेजर्स लिए वो मजदूरों तक पहुंचे, तो मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान तो काम नहीं किया. और कहा जाता है कि मजदूर डेली काम करता है और डेली खाता है. क्या वो भूखे मर गए या भूख से नहीं मरे? तो अगर भूख से नहीं मरे तो कैसे? क्योंकि सरकार ने प्रोविजन कर दिया. इसका मतलब कि भूख है नहीं ना समाज में. इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भूख को तो हमने बना रखा है, हमने क्रिएट कर रखा है. गैप, इकोनॉमिक गैप करके, फाइनेंशियल गैप को क्रिएट करके. है कहाँ वो? उसी तरह बेरोजगारी के बारे में कही जा सकती है, उसी तरह हर फेनोमेना के बारे में कहा है. लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, भूख अनुभव के रूप में क्या होता है, भूख की वास्तविकता क्या है. अब अनुभव के स्तर पर ले लीजिए, तो मैं भूखा रख के फिर देखूं कि भूख किसे कहता हूं. मैं भूखा कभी रहूं नहीं और कोई मुझसे पूछे अच्छा कल्पना करिए कि आप अगर भूखे हैं तो कैसा लगता है. हाउ विल यू नो? सो until unless you experience what hunger is all about, you passes through the condition of hungerness, you'll never understand what hunger is all about, that what exactly happens with an individual when he or she is hungry. So see, both the research, the purpose is to understand hunger, but the context is different. So research question will be different, the methodology will be different, and everything will be different. Why? Because the fundamental questions are the different one. इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जब आपसे कोई कहे कि ontology क्या है, तो ontology is the study of claims and assumptions that are made about the nature of social reality. Claims about what exists, what it looks like, what units make it up, and how these units interact with each other. कई बार हमको लगता है कि भाई हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया. मेरे यहीं पे एक प्रोफेसर साहब हैं, वैसे वो हेल्दी है, बहुतों को दिखाया, लेकिन उनकी जो समस्या का समाधान है वो समाधान ही नहीं हो रहा है.
कई बार हमको लगता है बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ बीमारी पे फोकस करते हैं, बीमार पे नहीं फोकस करते हैं। मेडिकल साइंस में बीमारी के इलाज के साथ साथ बीमार पे भी फोकस करना है आपको, और उसके लिए the phenomena of disease or existence of disease or reality of that disease समझना पड़ेगा। तो ontology शॉर्ट में एक शब्द में क्या है कि what is a reality and whether that reality exists or not. What is a reality of a phenomena, अगर social nature है, social phenomena, and whether that social phenomena exists or not. Similarly मैं education में अगर करता हूँ, what is the reality of that educational phenomena and whether that exists or not. For example, जी फलाना फेल हो गया, जॉन हॉल्ट को पढ़िए आप, उसकी तमाम किताबों में साफ वो कहता है कि कोई भी छात्र फेल होता ही नहीं है, सिस्टम उसको फेल करता है, क्योंकि सिस्टम में ये ताकत ही नहीं जानने के लिए कि वो इंसान किस चीज के लिए बना है। हम सबको एक जैसा देख लेते हैं, इसीलिए कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं, और जो टॉप करते हैं, गोल्ड मेडल करते हैं, वो उतने सक्सेस नहीं होते हैं जितना कोई एक एवरेज व्यक्ति जीवन में सक्सेस हो जाता है। क्यों भाई? भाई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में I would like to share with you, I was watching one interview conducted by someone else, I'm forgetting his name, and both the giants were sitting together, Steve Jobs and Bill Gates. And the question was just reversal. So Bill Gates was asked the character, the significance and importance of being Steve Jobs, and Steve Jobs was asked being a Bill Gates, importance of Bill Gates, characteristics of, and you all know that both hate each other like anything. Like I remember, perhaps I don't know whether he has written this statement in his book or not. He made a statement, Bill Gates, Steve Jobs, कि जिंदगी का पाई पाई लगा दूंगा माइक्रोसॉफ्ट को बर्बाद करने में. Why? Because the whole life he believed कि बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के आइडियाज को चुराया है. You'll be surprised to know that. So being a researcher, your expansion should be very, very wide, friends. Read as much as you can. Again, I'm telling you. So I love to read all these things. Anyway, and then when same Steve Jobs in front of Bill Gates was asked, okay, tell me, what do you think? What is most significant aspects of being Bill Gates? And what was the answer given by Steve Jobs in that interview? It must be somewhere in the archive. You please find out, see yourself if you are interested to understand the nuances of the research, particularly how to conduct interview, how to ask questions. He said he is the first man on this earth who made people realize there could be a company without anything. I mean, a company can be established only for the softwares. Before him, everybody thought company means manufacturing unit. Company means only hardware. But he was the first one, perhaps, in the words of Steve Jobs, who introduced the concept of no, even the software company could be established. And you know the power of Microsoft company, which made Bill Gates what? The most richest man on the earth. It means what I'm trying to say, the ontological reality, try to see which is not existing. Actually, that's existing, but human reasoning ability, logical power, sometimes unable to understand that. And that's why I would like to conclude. Ontology is the study of claims and assumptions that are made about the nature of social reality. Claims about what exists, what it looks like, what units make it up, and how these units interact with each other. जरा जल्दी से epistemology समझ लेते हैं. Epistemology बड़ा theory of knowledge.
अरे जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको आप समझना चाहते हैं, पहले ये तो कर लीजिए निश्चित कि क्या आप उसको जान सकते हैं, क्या उसको जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है। अगर आप वो कहता है कि हाँ जाना जा सकता है इन माध्यमों से, तो हम फिर बाद में कैसे जाना सकता है, मेथोलॉजिकल क्वेश्चन होता है। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वैलिड नॉलेज एंड हाउ कैन वी ऑब्टेन द वैलिडिटी ऑफ वैलिड नॉलेज, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। वो जमाना गया कि एपिस्टेमोलॉजी इज अ थियरी ऑफ नॉलेज इन व्हिच वी स्टडी व्हाट इज नॉलेज, व्हाट आर सोर्सेस ऑफ नॉलेज, हाउ टू वैलिडेट नॉलेज। आज तो लोग ये सवाल करने लगे हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं जानता हूं, मेरे टीचर ने कहा था कि सपोज अरविंद कहता है कि मैं अपने सर को जानता हूं, व्हाट डज इट ही मीन बाय दैट? सो व्हेन यू क्लेम दैट यू नो रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो कुछ लोग कहते हैं कि वो मैं तो रिसर्च को सबसे अच्छा समझता हूं और क्वांटिटेटिव रिसर्च तो मेरे टिप पे है। क्या मतलब है उसके जानने का? एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का मतलब है कि जितने सवाल उससे हैं, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल है या नॉन ट्रांसेंडेंटल है, उस सबका जवाब आपको पता है। और मैं कहता हूं मित्रों कि दुनिया का ऐसी कोई एंटिटी नहीं है जिसका हर प्रश्न का जवाब मनुष्य ने अब तक जान लिया है। अगर मैं जेनोफोन्स को कोट करूं तो गॉड भी नहीं जान सकता है, मनुष्य की तो बात छोड़िए। So what constitutes valid knowledge and how can we obtain it? तो आप कहेंगे कि अच्छा दोनों में क्या संबंध हुआ फिर ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी में? हाँ, ऑन्टोलॉजी भी समझ में आ गई और एपिस्टेमोलॉजी भी समझ में आई। Ontologists study what we mean when we say something exists. I repeat, ontologists study what we mean when we say something exists, and an epistemologist studies what we mean when we say we know something. वो अध्ययन करता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, और एपिस्टेमोलॉजिस्ट ये बताता है कि उसका कैसे जान सकते हैं, या क्या मतलब है जब आप कहते हैं कि आप जान गए हैं या आप जानते हैं। ज्यादा समय अब इस पे नहीं लगाऊंगा। कल मैंने कहा था कि ये पैराडाइम है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है वो 4 पैराडाइम में बता हुआ है। कोई बात नहीं, आपने 15 मिनट में और लूंगा, 15 मिनट में और लूंगा। आपने मुझे आपने हाँ हाँ कहा था बिल्कुल ठीक कि है, मैं मुझे याद याद आ गया, दिला दूं। मुझे याद आ गया। जी 4 सर। बेसिक पैराडाइम है क्वालिटेटिव रिसर्च के फ्रेंड्स। पहला शुरुआत है पोस्ट पॉजिटिविज्म से, फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म, फिर है क्रिटिकलिज्म, और आजकल एक चल रहा है पैराडाइम जिसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म, जिसको फिलोसॉफिकली एक्लेक्टिसिज्म कहा जाता है। मैंने लिखा नहीं जानबूझ के वो शब्द, कि बहुत सारे लोग नहीं फेमिलियर होंगे तो फिर कहेंगे वो जार्गन यूज करने से क्या फायदा है। यानी जो सुटेबल हो जाए, जैसे सुटेबल हो जाए, जिससे मुझे उस फिनोमेना की रियलिटी को मैं जान पाऊं, मैं वो अप्लाई करूंगा, चाहे वो किसी भी रिसर्च के एंगल से वो वैलिड हो इनवैलिड हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो वेरी शॉर्टली, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, यू ऑल नो फ्रेंड्स, व्हाट इज दैट? The positivist paradigm is also called the scientific paradigm. सिर्फ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को यह मान्यता मिली है कि वो साइंटिफिक पैराडाइम है, और इसीलिए होड़ चली हुई है दुनिया में। क्या एजुकेशन वाले भी अपने को साइंटिफिक कहलाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सोशियोलॉजी वाले भी अपने को साइंटिफिक कहलाना चाहते हैं। उनका तो खुदा ही ऑगस्ट कॉम्टे आपको पता है, जो स्वयं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आदमी था, पढ़िए आप। तो एक होड़ चली, साइकोलॉजी भी अपने को साइंटिफिक बनाना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं साइंस और गणित ने ये कर लिया इस दुनिया में, जैसे आज हो गया है कि इकोनॉमिक रियलिटी इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। पैसे हैं आपके पास तभी आप आदमी हैं, पैसे नहीं है तो आदमी नहीं। और वो पैसा है क्या? वो पैसा इमेजिन्ड रियलिटी का रिफ्लेक्शन है बस, वो रियल रियलिटी है नहीं मित्रों। कभी हम लोगों ने जो ग्रैंड नैरेटिव वाला शुरू किया था उसमें आप जुड़ेंगे तो एक दिन हम इस पर डिस्कोर्स रखेंगे। जो है नहीं वो हो कैसे जाता है, और जो होता नहीं है वो दिखता कैसे है, एजुकेशनली एंड सोशियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली बोथ। एनीवे, सो द पॉजिटिव पैराडाइम को ही साइंटिफिक पैराडाइम कहा जाता है। सो द टर्म पॉजिटिविज्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय whom? ऑगस्ट कॉम्टे। कौन था? लोग कहते हैं फ्रेंच फिलोसोफर, बेसिकली वो मैथ्स और फिजिक्स का आदमी था, who believed that reality can be observed, और कहा कि जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है वो रियलिटी नहीं है।
क्या मानेंगे आप इस बात को? कोई नहीं मानेगा, मैं तो कम से कम नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो दिखता नहीं है वो होता है, जो होता नहीं वही दिखता है, क्योंकि वही दिखाया जाता है। 3 घंटे की मूवी वो होता थोड़ी है, देखिए बना के दिखाया जाता है आपको। जिस दिन एक छात्र एमएड कर लेता है, उस दिन से उसका सपना होता है नेट कर लें या जीआरएफ। अच्छा, दोनों कर लिया तो पीएचडी कर लो, क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी में आने के लिए 30 नंबर पीएचडी के मिलते हैं। फिर उसके बाद उसका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। फिर उसको एक सपना दिखाता है तुम एसोसिएट कब हो जाओगे। एसोसिएट के बाद उसका सपना समाज दिखाने लगता है एकेडमिक वर्ल्ड, प्रोफेसर कब हो जाओगे, हेड कब हो जाओगे, डीन कब हो जाओगे, वीसी कब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। जबकि एकेडमिक लाइफ में इन सारी फेनोमेना की कोई रियलिटी नहीं। So the purpose of research in this paradigm, कौन सा पैराडाइम? पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, is to prove or disprove a hypothesis. अब आप सोच लीजिए, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या था, वो किस सोच के साथ इसको समाज में लाना आ रहा था। और मैं अगस्त काम्टे की आलोचना सिर्फ एक बात पे करता हूं कि उसने नेचर ऑफ रियलिटी को, जबकि वो फिलोसोफर खुद है, उससे क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डिफरेंट जनरेशन का थिंकर हूं, इसलिए मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं सोचूं, मैं अलग सोचूं। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये इन लोगों की तो बात छोड़िए, ये लोग तो सामान्य से अगर फिलोसफर थे। अगर बाद के बड़े क्लिष्ट प्रोफेसर का आप नाम लें, जिसमें रेन डेकार्टे का नाम लेंगे, लेबनीज का नाम लेंगे, आप इमैनुअल कांट का नाम लेंगे, इवन ऑगस्ट कॉम्टे का भी नाम ले सकते हैं आप, बाइको का नाम लेंगे, ठीक है, रसल का नाम लेंगे, व्हाइटहेड का नाम लेंगे, विटगेनस्टाइन का नाम लेंगे, इनसे भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि अपने ही ऑनर के हैं, हम अपने ही ऑनर के हैं। आपको पहले विश्वास दिलाना होगा एज ए रिसर्चर, यू आर ए यूनिक रिसर्चर। इसका बैकग्राउंड क्या किया उसने, जो कि कल मैंने कहा था, उसने नेचर ऑफ रियलिटी ऑफ सोशल फेनोमेना एंड नेचर ऑफ द रियलिटी ऑफ फिजिकल फेनोमेना को एक मान बैठा। उसको लगा कि जिस तरीके से साइंस और मैथमेटिक्स की फिजिकल फेनोमेना की रियलिटी को साइंटिफिक स्टडी से समझ लिया जा सकता है और सॉल्व कर लिया जा सकता है, उसी तरीके से एजुकेशन में भी, साइकोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी में भी और समाज में कर लिया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक, द नेचर ऑफ सोशल फेनोमेना इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ फिजिकल फेनोमेना, जिसको हार्ड साइंस या सॉफ्ट साइंस में इसका प्रयोग होता है। लेकिन देखिए कहां से लिया है, और इसीलिए क्यों हाइपोथेसिस की परंपरा सोशियोलॉजी और एजुकेशन में और इवन साइकोलॉजी में सही नहीं है, बाय दिस आर्गुमेंट ओनली। एंड देयर आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। आपको पता है कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो साइंटिफिक मेथड है, तो उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना ही होगा, जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स करनी ही होगी, ठीक है, एंड कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा ही होगा, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट मेथड होगा, क्योंकि साइंटिफिक मेथड इसी को कहा गया है। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए दोनों की क्या है, ये इसलिए दिखाता हूं, ये बहुत जरूरी है। रियलिटी इज एक्सटर्नल टू द रिसर्चर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। ऐसा होता है क्या? लेकिन ये उनकी मान्यता है, इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। जिस समय आपने ये तय कर लिया कि मुझे पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में रिसर्च करना है, तो उनकी ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो अपने पैराडाइम में वो सही है, गलत नहीं है। ये दूसरी बात है कि हम उस पैराडाइम को बोरो करते हैं और अपने में लगाते हैं। तो किसी की उधार ली हुई शर्ट आपके शरीर पे अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। जब शर्ट अच्छी नहीं लगती है, जब किसी से लिया हुआ खाना जो आपके रुचि का नहीं वो अच्छा नहीं ले सकता है, तो नॉलेज और एजम्पशंस कैसे हो सकता है? वो तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। बट सी व्हाट ontological assumptions हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की, कि रियलिटी इज एक्सटेंडेड एक्सटर्नल टू द रिसर्चर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। और जो एक्सटर्नल है उसको कैसे जानेंगे आप? कल मैंने उदाहरण दिया था, इसीलिए आज तक हम हेल और हेवन को नहीं देख पाए, क्योंकि एक्सटर्नल है, हमारा हिस्सा ही नहीं। तो उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन क्या है? इफ द रियलिटी इज एक्सटर्नल and if that reality can be understood by the objects in the space, तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? तो बड़ा साफ है, यहाँ आपको छूट नहीं है। The methodology of the natural science
should be employed to study the social reality. करना पड़ेगा आपको। और मैंने पहले ही लाइन में खारिज कर दिया कि नेचर ऑफ साइंटिफिक फेनोमेना या फिजिकल फेनोमेना इन ए साइंटिफिक रियलिटी एंड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए नेचर का स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। भाई दो व्यक्ति के बीच में क्यों नहीं बनती है? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उसके, लेकिन एक फैक्टर होता है कि नेचर जब तक कोइंसाइड नहीं करता है कंप्लीट मैपिंग हो ही नहीं सकती है। इसलिए दो माइंडसेट के मेंटल मैपिंग का होना जरूरी है, नेचर का मिलना जरूरी है, तभी होगा। सेकंड क्या है ओंटोलॉजिकल अजम्पशन? ऑब्जेक्ट्स हैव मीनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्शियसनेस ऑफ देम। इट मींस सपोज देयर इज अ पेन इन माय हैंड, okay, even if I am conscious of this or not, it has its meaning. To some extent it is right, but to a great extent it is wrong at the same time. So truth can be attained because knowledge rests on a set of firm, unquestionable, indisputable truths from which our beliefs may be deducted. इसलिए deductive logic आपको लगाना पड़ेगा scientific paradigm में। लगाते हैं ना inductive logic और deductive logic. So reality can be captured. Third assumption इसका क्या है? Reality can be captured by our senses and predicted. Senses से तो कहाँ पता चलता है, लेकिन ये कहता है इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है? Knowledge is generated deductively from a theory or hypothesis, and therefore knowledge is objective. अब मुझे बताइए कि कोई मुझे बता दे एजुकेशन की कोई फेनोमेना ऑब्जेक्टिव है? सोशल साइंस की, सोशल एक्टिविटीज की, सोशल एक्ट्स की कोई फेनोमेना ऑब्जेक्टिव है? लेकिन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में अगर आप वर्क करेंगे तो आपको इसको मानना ही पड़ेगा। उसी तरह इसका मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है क्या? जब आप पॉजिटिविस्ट पैराडाइम यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप रिसर्च कर रहे हैं तो मेथोडोलॉजिकल क्या होगा कि क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस आर स्टेटेड इन प्रोपोजिशनल फॉर्म एंड सब्जेक्टेड टू एम्पिरिकल टेस्ट टू वेरीफाई देम। तो अब कैसे करें? तरीका तो पता नहीं है, तो क्वेश्चनर बना लिया हमने, नहीं इंटरव्यू कर लिया हमने, और पता नहीं क्या क्या कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कल कहा था, इसको दोहराऊंगा नहीं, अच्छे से क्वांटिटेटिव रिसर्चर बनने के लिए आपको डिडक्टिव रीजनिंग का पता होना चाहिए, आपको रियलिज्म का पता होना चाहिए, आपको साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं, गैलीलियो की स्टडी पता होनी चाहिए, आपको ऑगस्ट कॉम्टे की पॉजिटिविज्म को डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म अगर आप एक्सेप्ट कर लिया आपने बिलीफ सिस्टम में, तो पॉजिटिविज्म ऑगस्ट कॉम्टे का जरूर पढ़िए। ही वाज अ मार्वेलस थिंकर। हाँ, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ पॉइंट पे, बट ग्रेट थिंकर। आपको मैं सलाह दूंगा कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म पढ़िए जो वियना सर्कल ने शुरू किया था। आप इंडक्टिव रीजनिंग पढ़िए जो फ्रांसिस बेकन का दिया हुआ है, मार्वेलस आइडिया है, जो एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे इंडक्टिव लॉजिक उतना ही पावरफुल है जितना कि डिडक्टिव लॉजिक, जबकि ग्रीक का पूरा वेस्ट समाज मानता था कि डिडक्टिव लॉजिक के सामने इंडक्टिव लॉजिक कुछ भी नहीं है। बट ही इज द मैन, बड़ा यंग ब्रिलियंट था और उसने प्रूव किया कि है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा मैंने कहा कि आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात, लेकिन बहुत बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसका जरा ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन देखिए और एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन देखिए। वहां कहा कि रियलिटी इज क्या था, याद करिए जरा। वहां था रियलिटी इज, फिर से दिखा देता हूं आपको, कि रियलिटी इज एक्सटर्नल टू द रिसर्चर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। यही कहा ना, फिर से दूसरा भी दिमाग में रख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स हैव मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्शियसनेस ऑफ देम और रियलिटी कैन बी कैप्चर्ड बाय आवर सेंसेस एंड प्रेडिक्टेड। जरा गौर से देखिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी जिन लोगों ने पॉजिटिविज्म की मुखालफत की, बहुत एक लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, तो सबका नाम लेने लगूंगा तो उसी में आज पूरा 2 घंटे चला जाएगा। उन लोगों ने अपना स्कीम दिया और कहा कि क्यों ये जरूरी है कि उनसे अलग हों। तो ये कहते हैं कि रियलिटी इज इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन एंड इज सब्जेक्टिव। और मैं अपने को इसी धारे में पाता हूं, इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म पे किताब लिखने का फैसला लिया था फ्रेंड्स। रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड
दुनिया की हर रियलिटी कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है। और मैं तो कह रहा हूं, जिसके नाम पे तलवारें खींच जाती हैं और एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म का गला काट देता है, वो उसमें जो गॉड की कॉन्सेप्ट है वो भी कंस्ट्रक्टेड है। सो रियलिटी इज इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन एंड इज सब्जेक्टिव। दूसरी बात क्या कहा, पीपल इंटरप्रेट एंड मेक देयर ओन मीनिंग ऑफ इवेंट्स। किसी भी घटना का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ मनुष्य देता है। बिल्कुल सच है। वही घटना किसी को बना डालती है, वही घटना किसी को मार डालती है। एंड इवेंट्स आर डिस्टिंक्टिव एंड कैनॉट बी जनरलाइज्ड। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च जनरलाइजेशन के खिलाफ है। एंड देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन वन इंसिडेंट, ऑन वन फेनोमेना। और लास्ट में, कॉजेशन इन सोशल साइंस इज डिटरमिन्ड बाय इंटरप्रेटेड मीनिंग एंड सिंबल्स। वहां क्या है कॉजेशन? वो तो मानता ही है कि सब कुछ कॉजलिटी में ही वो एक्सप्लेन किया जाता है साइंटिफिक पैराडाइम में। अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो देवीय घटना सत्य को नहीं मानता है, वहां वो बिल्कुल सच है। लेकिन कुछ घटनाएं बियॉन्ड कॉजेशन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जरा इसकी एपिस्टेमोलॉजी देख लीजिए। जब ये कहता है कि रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड, तो ये कहता है नॉलेज इज गेन थ्रू ए स्ट्रेटजी दैट रिस्पेक्ट्स द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड देयरफॉर रिक्वायर्स द सोशल साइंटिस्ट टू ग्रास्प द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन को समझना है, यानी सब्जेक्टिविटी यहां के मेन स्टे हो जाता है। और एक बात और, तमाम रिसर्च सब्जेक्ट को समझने के लिए की जाती है, तो सब्जेक्टिविटी नेगेटिव कोनोटेशन कैसे हुआ भाई? इसीलिए पैराडाइम को समझना जरूरी है, पैराडाइम की अपनी लिमिटेशन को समझना जरूरी है और उसकी स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है। दूसरी बात, नॉलेज इज गेन्ड इंडक्टिवली टू क्रिएट ए थियरी। इसलिए थियरी का जन्म देते हैं और इंडक्टिव लॉजिक का उपयोग करते हैं। नॉलेज अराइजेस फ्रॉम पर्टिकुलर सिचुएशंस and is not reducible to simplistic interpretation. Or last but not the least, knowledge is gained through personal experience. और कल जैसा कि मैंने कहा था कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिसर्च करने के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च को करने के लिए आपको फेनोमेनोलॉजी की समझ होनी चाहिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म की समझ होनी चाहिए, हर्म्यूनेटिक्स की समझ होनी चाहिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शन की समझ होनी चाहिए और एथनोमेट्रोलॉजी की समझ होनी चाहिए, जो जिसको सबसे ज्यादा किसने दिया है? एंथ्रोपोलॉजी ने दिया है। ओके, एक और पैराडाइम है जिसको कहते हैं क्रिटिकल पैराडाइम, और क्रिटिकल पैराडाइम एजुकेशन में खासकर सबसे ज्यादा उपयोग होता है, खासकर पॉल फैराडे की किताब क्रिटिकल पेडागोजी से। और अब तो आपको मान ही लेना पड़ेगा कि हमारी जो NEP 2020 है उसने भी कहा है 21st सेंचुरी स्किल के लिए एजुकेशन होगी। और 21st सेंचुरी स्किल का पहला स्किल क्या है among all the 12 or 14 skills? क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकलिटी इज द की। लेकिन इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रिटिकल पैराडाइम की जो अपनी, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रिटिकल पैराडाइम के लिए मेरा रिसर्च सबसे सुटेबल है, तो आपको उसकी ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन और उसकी एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन से सबसे पहले आपको परिचित होना होगा, तब रिसर्च को आगे बढ़ाइए। क्या कहता है ये? सोशल रियलिटी डिफाइंड फ्रॉम पर्संस इन सोसाइटी। इसलिए समाज की वास्तविकता समाज नहीं तय करेगा, समाज में जो लोग हैं वो तय करते हैं। इसलिए देखिए, मूल्य का जो प्रश्न आता है, हर जनरेशन कहता है ओ हमारे जमाने का मूल्य बड़ा अच्छा था, आज का मूल्य बहुत खराब है, समाज में मूल्य का ह्रास हो गया है, मूल्य का विघटन हो गया है, लोग अनैतिक हो गए हैं। दोस्तों, ये सत्य नहीं है। हम जैसे लोग कम से कम तो इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम जैसे लोग तो मानते हैं हर जनरेशन को अपना वैल्यू सिस्टम तय करने का अधिकार है, क्योंकि समाज तो मनुष्य से बनता है। और क्रिटिकल पैराडाइम में ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशन भी यही है कि सोशल रियलिटी इज डिफाइंड फ्रॉम पर्संस, बाय द पर्संस इन द सोसाइटी, नंबर 1। नंबर 2, social reality is socially constructed through how? Through media, institutions and society. इसलिए समाज की वास्तविकता, इन सब चीजों को आप निकाल देंगे तो समाज कहां बचता है? यही चीजें तो मिलकर समाज बनाती हैं। इसलिए जो लोग सोशियोलॉजी के लोग यहां जुड़े हैं, उनसे एक सवाल मैं पूछूंगा
बड़े बड़े लोगों को हम कोट करते हैं, नहीं? ऑगस्ट कॉम्टे से शुरू करते हैं, मैकाइवर एंड पेज तक आते हैं, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी। वो क्या चीज है जो समाज को समाज बनाती है? सोचिए जरा। और उस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो बड़े बड़े थिंकर के जो समाज के डेफिनेशन है वो एक भी सही नहीं है। तो तीसरा जो इसका ontological assumption है वो है कि social behavior is the outcome of particular illegitimate, dominatory and repressive factors. Illegitimate in the sense, आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, तो legitimate होना चाहिए, नहीं, illegitimate in the कोहेन का ये definition है, illegitimate in the sense that they do not operate in general interest. इसका मतलब one person's or one group's freedom and power is bought at the price of another's freedom and power. नहीं, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमारे संविधान के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, जो संविधान को पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग और हम लोग उसके आधार पे बने कानून को लागू करने वाले लोग, कम से कम एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में वकालत करते हैं या पॉलिटिकल अफेयर में करते हैं या जॉब मार्केट में करते हैं, वो सब एंटीथेटिकल है, एंटी ह्यूमनिज्म है। कभी और हम उस पर चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए कि अगर ये तीन चीजें आपने समझ लिया, ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशंस, अब आपको एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशंस तय करना है, तो क्या आएगा? क्योंकि अब तो हमने रियलिटी की बात कर ली, अब जरा नॉलेज की बात करें। साफ बात, रियलिटी की जब बात करेंगे फिनोमेना की तो वो ऑन्टोलॉजी है, जब नॉलेज की बात करेंगे वो एपिस्टेमोलॉजी है, जब वैल्यू की बात करेंगे और एथिक्स की बात करेंगे वो एक्सियोलॉजी है, जब लैंग्वेज की बात करेंगे वो रेटोरिक है, हाउ टू डू की बात करेंगे तो वो मेथोलॉजी है। सिंपल। So knowledge is socially constructed through media, institutions, and society. What counts as a worthwhile knowledge is determined by the social and positional power of the advocates of that knowledge. इसलिए knowledge, दोस्तों, अगर हेनरी जीरो को आप पढ़ेंगे तो कहता है तो पावर का विषय है, यानी पावर में जो लोग लगते हैं वो डिसाइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल सच है। हेड एंड डीन की कमिटी डिसाइड करता है कि रिसर्च के कोर्स वर्क में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। Why? Because knowledge is produced by power and is an expression of power rather than truth. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि no knowledge is ultimate knowledge, no truth is ultimate truth. इसलिए where is truth? अगर कोई ट्रुथ एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड ट्रुथ है और कोई ट्रुथ नहीं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में जीसस ने दिया हो, चाहे वो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया हो, चाहे हमारे में गीता या रामायण या कोई और दिया हो, वो सब कंस्ट्रक्टेड है, वो सब कंस्ट्रक्टेड ट्रुथ है। इसीलिए फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रुथनेस ऑफ ट्रुथ या ट्रुथ ऑफ ट्रुथनेस, है ही नहीं। एनीवे, तो अब क्रिटिकल पैराडाइम में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि ये 30s में फ्रैंकफर्ट स्कूल ने इसको जन्म दिया था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थियरी को आप जरूर पढ़िए, जिसमें आपको थियोडोर एडोर्नो आएंगे, हॉर्खर आएंगे, मर्क्यूज आएगा, इवन कुछ हद तक सोशल साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम को भी आप पढ़ सकते हैं, या 70s में जो आए थे क्रिटिकल थियरिस्ट कार्ल एप्पल, हैबरमास, इन सबको आप देख सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि क्रिटिकल पेडागोजी पॉल फेरेरे ने किया, उसको जरूर पढ़ना और समझना जरूरी है। एक बार में कभी क्रिटिकल पेडागोजी नहीं समझ में आएगी। I have read more than 10 times because my professor says he has read that book 17 times. माइकल फूको का स्ट्रक्चरलिज्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रिटिकल अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एलिस्टर पेनिकुक को भी पढ़ना पड़ेगा। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जिसमें मैं थोड़ा सा बात करूंगा, मैंने कल कहा था, नॉर्मन फेयरक्लॉफ को भी पढ़ना पड़ेगा। क्वियर थियरी को आप पढ़िए, जूडिथ बटलर का है, या फेमिनिज्म का सिमन डी बोवर और बेटी फ्राइडमैन को देखिए, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया है उसने। क्यों मदर को मदर अर्थ कहा गया है? भाई मदर फादर क्यों नहीं? क्यों भारत को भारत माता कह दिया गया एक डिस्कोर्स में, भारत पिता क्यों नहीं? और जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा, क्या ये कहना सच है? देखिए, हम लोग एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, इमोशनल नहीं होना है, चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी से हैं, कि क्या हम गांधी को फादर ऑफ नेशन कह सकते हैं?
ये सबसे बड़ा झूठ है। जिससे मैं कहता हूँ ना कि जब माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलो, टीचर भी कहता है, सब कहते हैं, जो कहता है झूठ मत बोलो और झूठ बोलना पाप है, वो सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा कोई झूठ है ही नहीं। इसलिए सोशल रियलिटी में और क्रिटिकल पैराडाइम में जब आप काम करेंगे ना, तो आपको हर छोटी छोटी बातें एकदम उल्टा दिखेगा कि अरे इसमें तो कोई सत्यता है ही नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं। एनीवे, कमिंग टू मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इसमें हम 4 फ्रेमवर्क की चर्चा करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्रेंड्स। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल स्टडीज एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट हर्मेनेटिक्स। और जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं तो हमारे हर रिसर्चर के लिए सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट होता है जब वो फील्ड में जाता है, कि जो वो कह रहा है उसके मीनिंग को कैप्चर करे और सिंबॉलिक मीनिंग को कैप्चर करे, नॉट लिटरल मीनिंग को कैप्चर करे, और जब वो कैप्चर करे तो उसको लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ वैलिडेट करे। आज दिक्कत यही है, इंसान कह कुछ और जाता है, जीता कुछ और है। इसीलिए बेचारे साधु महात्मा भी, मुझे उन पर बड़ी दया आती है। वो जो कहते हैं वो खुद जीवन में नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि जिस वो कहते तो हैं, वो जिस जीवन को जीते नहीं है। जिस जीवन को जीते हैं उनको कहने की उसमें क्षमता नहीं होती है, इसलिए उनकी जिंदगी और निस्सहाय हो जाती है। फाइन। सेकेंड, जब फिनोमेनोलॉजिकल आप बात करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि रिसर्चर के लिए नेचर ऑफ एन एक्सपीरियंस, उस अनुभव की प्रकृति क्या है, उसकी लिव्ड क्वालिटी क्या है। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी, और क्वालिटी क्या, दूसरे के अनुसार नहीं, दूसरा ना जज करे, उसको स्वयं से पूछिए। और तीसरा, एक्सपीरियंस इन ए फुलर और डीपर। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म में नॉट ओनली जॉन डेवी, उससे पहले विलियम किलपैट्रिक का एक्सपीरियंस इज द एसेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म। लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने देखा है कुछ किताबों में लिखा हुआ है that pragmatism states that there is no reality beyond practicability. That's wrong, friend. I'm very sorry. Yes, practicality is one of the important components of pragmatism, but actually that's not true. It is one of the components. The most important components from the pragmatist point of view is the experience. Experience is the essence of pragmatism, not the practicality is the essence of pragmatism. I don't know when I'll get the time. I would love to talk about that. So experience in a fuller or deeper level. इसलिए हर मनुष्य का experience. इसलिए Khalil Gibran, somebody asked Khalil Gibran, what do you think? What's love? And see that said, oh no, it cannot be answered in a generalized form as positivist paradigm expects from us from the research point of view. It's a different for different people. Meaning will always remain different, friends. Okay? Similarly, अगर आप 2 चीजों को जोड़ दें, hermeneutics को और constructivist को। Hermeneutics क्या है? Study of interpretation. So understanding and interpretation is the key. मैंने कल भी कहा था, अच्छा आपको नहीं कहा था, एमईटी वालों का, कि अंडरस्टैंडिंग जो पॉजिटिव पेडागोजी का जो की है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म से उसको सीखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज द की, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। सेकेंड, कंस्ट्रक्टेड रियलिटी को समझना है, नॉट अल्टीमेट रियलिटी को। ठीक है, इट्स ऑल राइट when Shankaracharya says Brahma Satyam Jagat Mithya, but what is a Brahma? Shankaracharya's Brahma cannot be same Arvind's Brahma, or X Brahms or Y Brahms and Z's Brahma. Why? Because all realities are constructed socially and individually. And therefore, if you are working in the methodological framework of constructivist hermeneutics, then understanding and interpretation is key. Similarly, critical studies, critical theory, critical textual analysis, skeptical inquiry, all these, and I'm not going that. But anyway, so I would like to stop here. But yes, with this precaution, if you think that it is important to understand the importance of ontology, epistemology, axiology, and rhetoric of
research in social science or educational research or psychological research or management, then what you will have to do? For God's sake, pursue it for better understanding. If you think, no, I think these things are useless, I'll not say you should pursue it, you should study it. No, forget everything and do your research as you are doing, because the whole world is doing. Why not you should do? Okay, so I would like to stop here. Uh, that's why sometimes when you talk in a narrative style or the dialogical form, what happens, friends, that you just forget that. Uh, I mean, you don't stick to the point, to point discussion. Anyway, but anyway, I have taken much of the time. So today, what I'm going to do, as mentioned in your brochure, I'm going to talk about narrative inquiry, and this inquiry as a research method is very close to my heart. And maybe we are going to interview uh, uh, tomorrow and day after tomorrow for 2 batches of PhD students. And definitely, if I find someone interested, then I would like that he or she should do some study in this paradigm that is called the qualitative paradigm, and within paradigm, the narrative paradigm and inquiry paradigm. Well, so this is my title, and no need to say this. So what I'm going to do, I'm going to talk about first the narrative inquiry as a research method. What is narrative inquiry as a research method? No, there is a difference between the two. Second, I mean, firstly the in general and second in particular. Approaches to narrative inquiry. Of course, I'll be talking about the steps because some of you are very interested to to know that how to do that. So how to use narrative inquiry in academic research, in general, educational research in particular. Should I start? Well, these all, any book you will open, most of the thing you'll find as far as the qualitative approach to inquiry is concerned, first thing they talk about is the narrative. Second, phenomenology. Third, grounded theory. Fourth, ethnographic. Fifth, case study in a traditional mode. But in modern discourse of qualitative approaches to inquiry, they are not confined to all these five. So let me start with the narrative. What is a narrative? What do you mean by to narrate? You all must have studied in English grammar. For the first time, we come to know about the rules of narration when we, particularly in English grammar, no? That's the medium of the instruction. And so many rules there. It means to state the same thing in your own words. Am I right or wrong? To state somebody else's version in your own version without missing the meaning and essence of that statement. I hope I'm clear to you. So this is the simplistic meaning of narration. And from taking a clue from there, I would like to generate and build them. So narrative inquiry. So what is the purpose of narrative inquiry? Then I'll talk about. So simply narrative means retelling, restoring, etc., etc. What is the purpose of narrative inquiry? The purpose, the fundamental purpose is to establish the purposes, to describe the processes, and provide a convincing rationale for narrative modes of knowing. So, in short,
Am I audible? Am I audible? Okay. Friends, sorry, this is the limitation of online. So those who are projecting, people like me and others, that the online teaching discussion is the only reality that is going to happen, I think we need to think about that. Anyway, so uh, again, I'll have to share my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Okay, fine. We are looking, but So, it is yeah. blank. Yes, yes, yes. Okay. So the main purpose that when I want to know something, okay, in a narrative mode, then I should use narrative inquiry. Okay. And the fundamental purpose of narrative inquiry is to establish. Uh, um, can you see my slides also? Yes, sir. We are Okay. looking. Yes. Okay, fine, fine. So, to establish purposes, describe processes, and provide a convincing rationale for narrative modes of knowing. Convincing rationale, not only logical rationale. Okay, so for narrative modes of knowing, interpreting, and researching. And therefore, I would like to submit that narrative inquiry has a unique capacity to fathom the essence of human experiences. The essence of human experiences. Yes, of course, if your purpose is that which shampoo is used maximally by people, then fine, maybe narrative inquiry may not be useful. Or which channel people watch more and for which program. So if you're interested to, you know, to know something, you know, in a survey way, then it's a different thing. But as far as the experience of human life and human existence is concerned, I have no hesitation to say that narrative inquiry has a unique capacity to fathom the essence of human experiences, friends. Well, I would like to quote John Dewey. John Dewey has asserted in his writings that the ultimate aim of research is the study of human experience. Please read his writings on research. People think, oh, John Dewey is only philosopher and he has written only about educational phenomena. No. I mean, in America, in US, as an educational philosopher, I think he's the only one who has written much more than anyone in US has written. So he has asserted time and again in his writings that the ultimate aim of research is the study of human experience. But unfortunately, people like us who work in the area of educational research haven't taken a clue or not learned in the clue given by John Dewey. And then I would like to quote one of the most celebrated author in the area of narrative inquiry. He is none other than Clendenin and Cornelius. Maximum writings. A wonderful study he has done. Like, please read his two studies. One was Stories to Live By, Narrative Understanding of a School System. See, in education he has used. Or Narrative Inquiry, Experience and Story in Qualitative Research from the theoretical perspective. From the perspective, practical perspective, you can do. He published in the year 2000. So Clendenin and Conley have made a good cause for narrative as epistemological stance, research methodology, and scholarly discourse, all uniquely capable of getting at the content and intent of human experience. So if you really want to understand or capture the essence of human experience, not only in terms of content, but also in terms of its intent, then in the words of Clendenin and Connelly, narrative inquiry is the method
as far as qualitative research is concerned. And he has made a good cause for narrative, not only to know, but as epistemological stance. I mean, gel of all the three: epistemological stance, research methodology, and scholarly discourses. Why? The question arises, why? Why these people are advocating this? They have advocated this keeping very simple facts in mind, that narrative captures and investigates experiences as human beings live them. I repeat, it captures and investigates experiences as human beings live them. Suppose 2 years back, you are standing in front of Niagara Fall. I mean, in my all presentation, you'll find my first slide is Niagara Fall. No? And after 2 years, if I ask you, oh, how you felt, and when somebody asks you when actually you are standing there, do you think both the narratives will be the same one? So why Clendenin and Connelly has said this? Because they believe that it not only captures, but it has the capacity to investigate the experiences as human beings live them. Live them how? Live them in time, live them in space, live them in person, and above all, friends, live them in relationship. So those who undertake narrative inquiry need to attend to a three-dimensional inquiry space: the temporal, the spatial, and the personal social. And for any relationship studies, particularly with respect to person, I think this has the power. There is a book written by Balwant Gargi. बलवंत गार्गी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है Naked Triangle. And he shares his experiences with 3 women in his life. And maximum, I mean, he married a Western woman, right? When he was abroad, came in India. I mean, wonderful experiences. बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, Naked Triangle. So this mode of inquiry will equip you to conduct your research in 3-dimensional space. And what are those dimensions? The temporal, the spatial, and the personal social. देखिए, घटनाएं तो सारी मनुष्य के जीवन में घटती हैं, लेकिन समाज में घटती हैं. इसलिए व्यक्ति और समाज के बीच में जो कुछ स्ट्रगल होता है, उसमें जो घटनाएं घटती हैं, उसके अनुभव का बयान करना. इसीलिए कुछ किताब, रिलीजियस बुक, इवन आप रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं, आप अथिस्ट हैं, आप नॉन बिलीवर हैं, यू लव टू रीड दोज बुक्स. बहुत सारी ऐसी किताबें हैं. यू डोंट बिलीव इन गॉड, बट अगर वो किस्से कहानी है उस व्यक्ति से जो क्लेम करता है, जब उसके से बात करते हैं तो पता नहीं, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है. ऑटोग्राफी ऑफ एन योगी जो किताब है योगानंद की, करके देखिए, उसने अपने डिफरेंट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के बारे में उसमें लिखा है. वो नरेशन है उसकी लाइफ का, एज ही लिव्ड हिज लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग. Okay, friends. Now the question is why we should use narrative inquiry. We should use narrative inquiry because human lives are woven of narratives. मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है, मनुष्य का जीवन narratives का से बना हुआ एक जाल होता है. उसी से बनता है आपका जीवन. यानी आपकी कहानी से ही आपका जीवन बनता है. यानी आप एक तरीके से यूं, दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि आप अपनी कहानी लिखते जाते हैं और वही कहानी आपका जीवन होता है.
यानी जीवन आपकी कहानी और आपकी कहानी आपका जीवन. So human lives are woven of narratives. साइकोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी. कहते हैं जी आइडेंटिटी अपने आप बनती है नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी का निर्माण भी आप करते हैं. So individual construct their identities through their own and others narratives. अपनी कहानी और दूसरे कहानी दोनों के ताना बाना से आप अपने आइडेंटिटी को बनाते हैं. Suppose when I talk something philosophically, why do I quote Socrates, Plato, Aristotle, Xenophon, Homer, Hobbes, Marx, Aquinas, J.S. Mill, etc., etc.? Or in modern context, why do I quote Bertrand Russell, Ian Whitehead, Leibniz, Immanuel Kant, Descartes, and others? Because these they are the people, and with the help of those, I construct my own identity. Why did I make a statement yesterday that Russell is my ideal? Then many people tease me, oh, Russell had 4 wives or 5 wives. And people can talk like that. No, because of his intellectual might, a mathematical mind who has written on every issues in the society, on war, in society, on relationship, on education, what not. And you all know there are only 2 Principia Mathematica in the world. First was written by Newton, and the second by Russell and Whitehead. Only 2 in the world. So they are not wrong when they say that individuals construct their identities through their own and others' narratives. इसलिए मेरा जीवन, मेरी कहानी ही मेरी जीवन. इसलिए गांधी जब कहा कि कुछ संदेश दे दीजिए, कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. और वो जीवन क्या है? वो जीवन कुछ और नहीं, उस जीवन में जितनी कहानियां घटित हुई हैं, उन्हीं कहानियों के सीक्वेंस और सीरीज तो मेरा जीवन है. और याद रखिए, हर छात्र, हर शिक्षक, हर रिसर्चर अपनी कहानी को गढ़ता है. और यहाँ पे मैं हेराक्लिटस को कोट करना चाहूंगा. नैरेटिव इंक्वायरी के पक्ष में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस. आई हैव hundreds of articles, I have books, but I haven't found any research scholar who is so keen, because I don't want to impose anything on anyone else. जिसने कहा nobody can jump twice in the same river. किसी और ने क्यों नहीं कहा ये बात? हेराक्लिटस ने क्यों कहा? या किसी और ने क्यों नहीं कहा कि does he not know the God is dead? किसने कहा? नीत्शे ने कहा. ऐसे मैं घंटों आपको नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेटमेंट दे सकता हूं. ये उसके लाइफ के एसेंस की कहानी का एक छोटा हिस्सा है, जिसको वो एक वाक्य में कह रहा है. पढ़िए ज़रथुस्ट्रा द स्पोक, रिटन बाय नीत्शे. He writes that. अब कहानी क्या है? कहानी कैसे बनती है, या कहानी को गढ़ा कैसे जाता है? I'm sorry if my Hindi sentences are grammatically not correct. How these stories are formed, or how an individual constructs his or her story in his life. कई बार तो लगता है कि इसी के लिए जीवन जीना है. Every present moment, when Heraclitus says nobody can jump twice in the same river, मैं इस पूरे एक स्टेटमेंट से मैं आपको कहता हूं कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कोई एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर आए, ये पूरी एक थीसिस हम बनाए, और जो
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एजुकेशन में जो लोग ऑपरेट होते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, वो उसके लिए फायदेमंद हो। वो जब पढ़े उसे तो उसको लगे कि ये मेरी ही एजुकेशन की तो कहानी है। एवरी प्रेजेंट मोमेंट फ्रेंड्स हैज ए नैरेटिव पास्ट। क्या लगता है अभी मैं आपसे जुड़ा हूं, आज जुड़ा इसलिए जुड़ा हूं? नहीं, सबसे पहले ये आइडिया प्रमोद गुप्ता के दिमाग में आई, फिर उसने किसी और को कांटेक्ट किया होगा, फिर उसने मुझे भी कांटेक्ट किया कि हम सर ऐसा चाहते हैं। देखिए इसका पास्ट है, इसलिए ये जो 5 दिनों की घटनाएं अभी घटेंगी या जो घटनाएं घट रही हैं हमारे और आपके बीच में, इसका एक पास्ट है। मैं तो पता नहीं नैरेटिव इंक्वायरी को पढ़ने के बाद कहने लगा हूं कि इस दुनिया में प्रेजेंट और फ्यूचर तो है ही नहीं, सब कुछ पास्ट है। Every present moment has a narrative past and a narrative future possibility, friends. आज की कहानी कल एक नए कहानी को जन्म देगा मेरे जीवन में, इसलिए मैं ये कर रहा हूं और इसलिए आप 100 लोग मुझसे जुड़े हैं। पता नहीं कितनी बार इस स्लाइड्स को मैं चेंज करता हूं, मुझे भी नहीं याद रहता है। बट अगेन टुडे सिंस ऑलमोस्ट 11 o'clock, हाँ इस बीच में मैंने एडमिशन भी देखा है, इस बीच में मैंने लाइब्रेरी कमेटी की मीटिंग भी की, सब कुछ किया। बट अगेन मैं ढूंढता ही रहा हूँ कि कुछ और मिल जाए, कि कुछ और नई तरीके से मैं आज आपसे बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई एम अ वेरी सेल्फिश टीचर। माय एवरी इंटरेक्शन with my fellow participants, my teachers, my students is a learning experience for me. So every present moment has a narrative past and a narrative future possibility. Therefore, what I would like to make a statement is this, that social phenomena become a converging point for individual, for the collective groups and the cultural narratives. So individual narratives, collective narratives and cultural narratives, वो एक converging point काम करता है social phenomena. And therefore, if somebody asks you after today why you should use narrative inquiry as a research methodology, you must be in a position to say, if you're convinced epistemologically, that the narrative inquiry amplifies voices that may have otherwise remained silent. और जब मैं कह रहा हूं तो ये सिर्फ मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के चश्मे से नहीं कह रहा हूं, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंस के चश्मे से नहीं कह रहा हूं। I would like to share with you, when I started my career in 1996, since then I have been asking my students to write his or her autobiography. I said, yeah, good, you read other biography, but why don't you write your own autobiography? And let me tell you, friends, I have been fortunate to read majority of my students' autobiography. Not fully completed, till 15, 20 years, 25 years, 30 years of age, whatever they have covered. And it's amazing, it's a different one. Everyone has written differently. Because I have a condition, unfortunately, many things I'm not practicing nowadays because of n number of reasons. But even in a small place, where I was teaching, I said, no, please, you don't introduce yourself to me verbally. Please write about yourself and say, sir, what to write and how to write. Then this idea stuck in my mind. Please write your journey, your story, your biography till today and submit it to me. I'm telling you, it's not only Gandhi's biography is great, or Martin Luther King, or John Milton, or Abraham Lincoln. No, every individual's biography is unique. I'll expect all of you that one day you must write. Whether it is a published or not, forget about that. Please write and go through. It's very difficult to write own narratives truthfully. It's very difficult. Only Gandhi could write that he visited a prostitute in his book. It's very difficult for him.
So narrative inquiry amplifies voices that may have otherwise remained silent. And it is a methodology in which the researcher attempts to illuminate the meanings of personal stories and meanings of personal events in your life, personal episodes that occur in your life. Why each and every episode in your life is unique, whether the episodes are the good one or the bad one, whether you like it or dislike it, but each episode forms the part of your life. So narrative, why I'm saying all this? Because I would like to quote now Jerome Bruner, a social psychologist, though earlier he started his career as a behaviorist psychologist. That narrative is a mode of thinking, an expression of culture's storehouse of knowledge. Bruner has written in his writings. So teachers' knowledge, like, for example, education, teachers' knowledge and understanding of school and classroom practice is stored in the narratives, and discourse about practice is often in narrative form, friends. And that's why I quoted the work of Clandine and Conley, that is stories to live by, narrative understanding of a school program, school reform. Meenakshi Thapan's work, Life at School. See the story of the people. Or you read A.S. Neil's work, Summer is Hell. It's a story. How powerful it is. Why they have advocated for this? Because the inquiry focuses on mediated action. And it is qualitative and interpretive in nature. Because it will not give you the number, how much love you felt, whether nowadays I get, perplexed. That how come people are believing that somebody's love I can quantify? Anyway, in short, friends, narrative inquiry is storytelling. Somebody else's story. You have to narrate the same story in your own words in such a way that becomes the part of the knowledge discourse related to human life and human experience. Like what it feels when you are a student at Cambridge and Oxford, and what it feels when you're a student at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University or any uh, central university. So narrative, now a little bit I would like to talk about narrative inquiry as a storytelling. So the storytelling may be autobiographical. You ask him to write, and then you read, and then you produce it as a research product. Or it could be biographical, it could be testimonial, or in another form, any other form. Thus, I would like to submit that narrative may be spoken, narrative may be written, narrative may be visual story, and can be presented in various discursive formats, as it serves multiple purposes and can be approached in diverse analytical and interpretive ways. Recently, somebody sent me that how many semicircles are there in this group. On WhatsApp it was coming. And I asked at least 50 people, hundreds of people, can you see there are circles in this figure? And majority of them said, no, there is no circle, only squares are there. When you look at something, you interpret according to your own understanding and your life perspective. And interpretation is not so easy thing. So due to complexity and extensive detail, narrative data provide rich description and reveal meanings embedded not only in the content of the story, but also in the words and the images which come through symbols and they use to tell the story.
I'm sorry, because I'm using Apple platform. I have 5 small films which I usually show to my audience, and then I ask them that uh, can you write 1 page or 2 pages using the narrative inquiry techniques? Can you generate a story? I'm not showing you. Maybe when we'll be organizing workshop, literally how to do, I'll give you the whole list of readings and the research papers and even the books. I have more than 10, 15 books on one concept only, that is narrative inquiry. So narrative has become one of the most popular postmodern methods because it yields a contextual embedded text or set of images that can be subjected to multiple interrelations and discursive analysis. Now, let me talk about the narrative data. 15 minutes left. I'm so sorry. The methods to obtain narrative data are diverse. Not one method within. Now, method within method I'm talking about. So the method to obtain narrative data are very, very diverse. Some people collect only photographs, and out of that, suppose if you have to do a research that what pedagogic practices were there in the Nalanda University, what you will do? Like recently, somewhere I was delivering a lecture on NAP 20, and I said, all the time you quote Nalanda, Takshila, Bikramshila. Tell me what is the educational implication of that? Only saying this, that, oh, knowledge system was great, so much knowledge was there. Those things are not going to help much to the teachers. Please tell me something. What kind of pedagogical practices were there? But the people are no more. Only, the khandar is there. Now, taking a pic of that, can you narrate a story? And therefore, the methods to obtain narrative data may be diverse. Number one. Number two, interviewing, recording, audio or video are among information gathering strategies. Those are used most frequently to collect the narrative data. इसलिए किसी की आवाज को कैप्चर करिए, और जब आवाज को कैप्चर करते हैं तो सिर्फ उसके वाक्यों को नहीं लिखा जाता है, उस वाक्य के बीच में वो कितनी देर तक साइलेंट हो गया, कितना पॉज लिया, किन शब्दों को कहते हुए सिसकने लगा, किन शब्दों को कहते हुए इलेटेड होने लगा, यानी उस वाक्य के बीच में से पेन्स और प्लेजर को कैप्चर करना होता है. How to capture? I mean, you have to capture the meaning of the word, which usually those words don't convey. And that's why you need to be very particular about writing if you're using narrative inquiry. कि जहां पे weeping लिखना है वहां crying नहीं लिखेंगे, जहां crying लिखना है वहां sobbing नहीं लिखना है. फिनोमेना एक ही दिख रही है, नहीं, रोने का घटना है, लेकिन रोने के घटने के स्टेट अलग अलग है. You all know, those who belong to the English language, they know there are at least 4 or 5 types of crying. First is the crying, second is the weeping, third is the sobbing, fourth is the wailing. So many. Wailing, बिलाप करना जिसको हिंदी में कहते हैं. So photography could be, आपका डेटा फोटोग्राफी हो सकता है, आपका डेटा ड्राइंग हो सकता है, आपका डेटा पेंटिंग हो सकता है, आपका डेटा क्रिएटिव नॉन फिक्शन हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रीडिंग हो सकता है, एंड co-constructed narrative are other methods which are used to tell and present the story. कहानी तो कहनी है मुझे, लेकिन रिसर्च की भाषा में उस कहानी को कहना है. So from a data set, inductive analysis is used to reveal the themes, the patterns and the meanings that emerge from storytelling. वो अपनी कहानी कह रहा है, लेकिन उसमें से आपको थीम्स को जनरेट करना है, पैटर्न को ढूंढना है, अर्थ को ढूंढना है, और तब एक कहानी को बना के देना है. कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं, कहते हैं यार उसके कहानी बड़ा दमदार है, स्टोरी है. जबकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पर्दे पे जो देखते हैं उसमें कहानी तो होता ही नहीं.
कभी आपने सोचा है वो जो फिल्म मूवी आप देखते हैं वो फिल्म्स हैं क्या, जो देखते हैं आप, जो जैसे बनता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आप देखते हैं वो होता क्या है? Now, 50 minutes left. Types of narrative studies. One approach to narrative research is to differentiate types of narrative research by the analytic strategies used by authors. जैसे एक का मैं कोट करना चाहूंगा, पोकिंगन ने 1995 में, he takes this approach and distinguishes between analysis of narratives using paradigm thinking to create descriptions of themes that hold across stories or taxonomies of types of stories and narrative analysis. देखिए, analysis of narratives and narrative analysis. तो analysis of narratives में क्या होता है? In that you use paradigm thinking to create descriptions of themes that hold across stories or taxonomies of types of stories. And narrative analysis में क्या कहा है उसने? मैं नहीं कह रहा हूं, हॉकिंग्रॉन को पढ़िए आप 1995 में, in which researchers collect descriptions of events or happenings and then configure them into a story using a plot line. That's what I'm saying, friends. In one day, I cannot do justice with narrative inquiry as a research method. Okay. A second approach, एक approach जो पकड़े हमने दिया. Second approach is to emphasize the variety of forms found in narrative research practices. जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बायोग्राफिकल स्टडी करते हैं आप. गांधी को उसकी बायोग्राफी से समझना, या गांधी को किसी ने उसके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में लिखा तो लाइफ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से सीखना, या किसी समाज और संस्कृति और विद्यालय के बारे में ओरल हिस्ट्री से समझना. कुछ लोग इस तरह की भी स्टडी करते हैं. डलहौजी में जब हम गए स्कूल में, उसके 2 ब्रांच हैं हिमाचल में, अब और भी ज्यादा होंगे. जब पहली बार आई वाज डूइंग एमएड और एमफिल, तो हमारा एजुकेशनल ट्रिप हुआ था और सेक्रेड हार्ट स्कूल वी विजिटेड देयर. वी हैड हर्ड दैट if the principal is on round, she was almost 75 years old lady, जो सीधे चल भी नहीं सकती थी, झुक गई थी, जिसका बोन बिल्कुल हाफ बेंड. इफ शी इज ऑन राउंड, अगर कोई वीआईपी भी उससे मिलने आए तो उसको टाइम नहीं देती थी, क्योंकि उसका टाइम वो फिक्स था. I mean, for her, school administration is the first, everything else in her life was the secondary. We had heard the oral history. हम जब वहां गए तो एक्चुअली देखा, तो उससे क्या आप पता लगा सकते हैं कि उस मनुष्य का जीवन एक शिक्षिका और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कैसा रहा होगा, या उस स्कूल की लाइफ क्या है. और सेक्रेड हार्ट स्कूल में जो डलहौजी का है उसके बारे में आपको बताता हूँ, वहाँ वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिसके माता पिता ने वहाँ के पहले प्रोडक्ट हैं. यानी जैसे ही बच्चा वहाँ से 12th पास आउट करता है, उस समय तो 10th ही था, 10th पास, वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है कि इफ आई हैव चाइल्ड और चिल्ड्रन, तो उसका रजिस्ट्रेशन XY नेम से करा लेता है कि वो यहाँ पढ़ेगा. Can you understand the whole educational processes of that school on the basis of the life history of that principal, or the biographical study of that principal, or the oral history that is associated with that? ये दूसरा एक तरीका है. अब कहेंगे कि ये तो बड़ा ब्रॉड हो गया, थोड़ा सा प्रोसीजर जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या क्या करना है. First, now I'm going to talk about the procedure for conducting narrative research. Number 1, determine if the research problem or question best fits narrative research or not. पहला उसको determine करना है. Second, select one or more individuals who have stories or life experiences to tell you as a researcher, and spend considerable time with them gathering their stories through multiple types of information. कहो कुछ लिखा हुआ है तो दे दो, कुछ बोल के बोलो, कुछ सुनाओ, कुछ गुनगुनाओ, दूसरों से उसके बारे में जानो, क्योंकि उसकी कहानी आपको जानना है. मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है.
आपको लग रहा होगा आप तो केस स्टडी की बात कर रहे हैं. No. Third, collect information about the context of these stories. I told you that my dissertation in MPhil is related with male adolescents. Pains and pleasures of being adolescents. उस पर एक फिल्म भी बनी है. जिन supervisor, the supervisor under whom I conducted that research, she asked her MD students to produce a movie, and that movie has been, I mean, this is what she claims, dedicated to my research. It was the case profiling kind of thing, but amazing. I think I need further maturity to publish a book based on that research. Now, only 5 cases I took to understand the pains and pleasures of being male adolescents. Similarly, the pains of pleasures of being students in a particular school system, or in a particular society, or in a particular system. And then the third procedure is collect information about the context of those stories. जब वो कहानी कह रहा है उसका संदर्भ को नोट करना बड़ा जरूरी है. So narrative researchers situate individual stories within participants' personal experiences. नहीं, उसकी कहानी को आपको अपने अनुभव में नहीं करना है, उसकी कहानी को उसी के अनुभव में, उसका जो व्यक्तिगत अनुभव है उसी में कंटेक्चुअलाइज करना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है. So you have to situate individual stories within participants' personal experience, their culture and their historical context. जब मैं historical context कह रहा हूं तो time. And don't forget, among all the Freudian psychologists, including Freud, you know कि Freud had 3 disciples. Who are those? Adler, Jung, and Anna Freud. Anna, her daughter, became his disciple. So he produced 3 disciples. Freud. Among all Freudian psychologists, and among all these 4 people, Freud, Sigmund Freud, Adler, Carl Jung, and Anna, I like Carl Jung the most, because his stand is completely different as far as the essence of human experience is concerned. मनुष्य, देखिए, जब आज ये कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति सेल्फ मेड है या मैं सेल्फ मेड हूं, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गलत है. ये दुनिया का कोई मनुष्य सेल्फ मेड नहीं होता है. नो इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड is a self-made, friends. You are product of your individual efforts, your family efforts, but don't forget the importance of society and culture. Who sent Dr. Ambedkar to study abroad? Tell me. So it's not correct to say Gandhi is a product of himself or Ambedkar is a product of himself. No, nobody is a product of himself. Nobody is self-made. There is a role, and role of culture, role of the history of the society, role of that time, role of the space in which all these things took place. Who adopted that child and gave this surname to Ambedkar? There was a Brahmin teacher in that school. Who gave this title to him? And that's why, from the narrative perspective, the third very important thing is that to collect information about the context of these stories, number 1. Second, as a narrative researchers, you have to situate each individual story. Suppose there are 5 cases or 1 cases, whatever it is, or 9 cases. Somebody will be interested, okay, how many cases I should take for the narrative inquiry? It depends. So you have to, as a narrative researcher, you have to situate each individual stories within participants' personal experiences.
within their cultural context and their historical context. इसलिए हिंदू परंपरा में जो श्राद्ध के दौरान आप पानी देते हैं, अर्घ देते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि क्या सच में वो पूर्वजों को पहुंचता है? अब पूर्वजों को तो हमने देखा नहीं और सच में वो नहीं पहुंचता है, लेकिन क्या कहते हैं आप कि हे मेरे पूर्वज, मुझ में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है, वो सब तुम्हारे ही अच्छे संचित कर्मों का परिणाम है। चलिए रिलीजियसली भूल जाइए, आप साइंटिफिकली भी आप कहते हैं ना कि ह्यूमन सोसाइटी एज लार्ज, जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है, वी ऑल आर descendants of Homo sapiens. Homo sapiens are still evolving. They haven't evolved. ये कहना झूठ है, गलत है. Read Sri Aurobindo. Individual consciousness is still under the process of evolution. And therefore, from the narrative inquiry perspective, if you are writing your research thesis, you will have to situate individual story within participants' personal experiences, their culture, their historical context, and their time and space. Fourth, analyze the participants' stories and then re-story them into a framework that makes sense. तभी तो स्कॉलरली आर्टिकल बनेगा, तभी तो एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को जन्म देगा, तभी तो आज हम कह पाते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी और एथिक्स है, वो फेमिनिन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल गलत है, डिफरेंट है. अगर आपको अपनी मॉरलिटी चुनने का अधिकार है, तो उसको भी अपनी मॉरलिटी चुनने का अधिकार है. और देखिए समाज कैसे बदल रहा है. So fourth, very important is analyze the participant's story and then re-story them. लेकिन कैसे आप री-स्टोरी करेंगे इस भाषा में? इसीलिए मैं अब अपने पैराडाइम में रेटरिक को जोड़ा है. उस फ्रेमवर्क में, उस रिसर्च के फ्रेमवर्क में जो एक मीनिंग दे, जो मीनिंग आम व्यक्ति कहानी जो कहानीकार करता है, एक हिंदी में कहानी लिखने वाला या इंग्लिश में या किसी भाषा में, वो नहीं बता सकता है. वो सिर्फ कहानी कह रहा है. तो यहाँ जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टोरी टेलिंग में कह रहा हूँ, वो एक तरह का रीस्टोरिंग है. Restoring is the process of reorganizing the stories into some general type of framework. So the fifth procedure is collaborate with participants by actively involving them in the research. को देखो ये बात मैं लिख रहा हूं, क्या इस अनुभव और इन वाक्यों से तुम यही कहना चाहते थे? See, this is what I have described, and I have interpreted your description in such a way with reference to such and such context. Do you think I am correct? So you'll have to go back. Quality research, you have to go back again and again. Revalidation, validation, आपको उससे ही लेना होगा. Okay. Then there is a book, and they have given the 7-1, not very entirely different, but it's a very interesting figure. Since I have scanned it, so it's slightly blurred, but see, it talks in terms of 7 steps instead of first 5. Okay. And maybe when I'll be conducting the research, keeping both the models in mind, we'll take up one research problem, we'll formulate our research questions, and then we'll say how to conduct the narrative research, and we'll go about it. So I'm just showing you, right? And these are the steps. Identify a problem or phenomena to explore, select one or more participants to study, collect the story from the participants. I'm not explaining. Re-story or retell the individual's story. Fifth, collaborate with participants' story. And 2 more steps. Write a story about participants' experiences. And last but not the least, as I was saying, validate the report's accuracy. It means an accurate report is essential to preserving the story. Conferring with the individuals and searching for disconfirming evidence will protect the story's credibility. So these are the 7, but I'm not saying. In fine, it is all about story and restory.
And those who are interested, there is an organization called Katha. I have nothing to do with that, but I know that they are very powerful people in our culture, also in other culture also. I mean, the impact of a story, and you know the importance of a story in one's life, as our dadi and nani, the grandmothers, used to tell us, and still we share this story to our small children. Why don't we understand that if they are really so powerful and impactful, why those techniques, why those criterias, why those procedures are not used for social science research, educational research, human experience research? Study, I gave you the example. Why only data collection? This much money, सेंसेक्स के बढ़ने से इतना पैसे का फायदा हुआ और सेंसेक्स के घटने से इतने पैसे का नुकसान हुआ? नहीं. जब केतन पारिक ने या हर्षद मेहता ने फ्रॉड किया, तो जो लोग उससे जुड़े थे वो किस तरह के पेन्स और प्लेजर्स से गुजर रहे थे, उनकी कहानी को करिए, तो शायद सेंसेक्स की को हम बेहतर रेगुलेट कर पाएंगे, सोशल की इकोनॉमिक फेनोमेना को रेगुलेट कर पाएंगे, एजुकेशनल फेनोमेना को रेगुलेट कर पाएंगे, साइकोलॉजिकल सफरिंग को कर पाएंगे, मेडिकल डायग्नोस्टिक को होलिस्टिक बना पाएंगे, राइट? सो एक और, बिफोर आई से थैंक यू, प्लीज रीड द वर्क ऑफ हंटर, 2010 में उसने पब्लिश किया है, इवॉल्विंग नैरेटिव्स अबाउट चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ विक्टिम एंड सर्वाइवर पैराडाइम. अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, आई मीन इस रिसर्च को, तो यू नो उसने क्या किया कि सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टोरी कहने के लिए कही, एंड ऑल द 4 पार्टिसिपेंट्स told 4 different narratives about their experiences. What are the 4 different narratives? Narratives of silence, sexual abuse के बारे में, narratives of ongoing suffering, narratives of transformation, and narratives of transcendence. अब देखिए, आम कहानी ये बात नहीं कह पाएगा, but when a researcher will tell the story, rewrite the story from the research point of view, see what Hunter has done. Hunter said that when they told me the story, all the 4 stories were conveying that the 4 different types of narratives. हालांकि today it's not possible, शायद हम जब वर्कशॉप मोड में करेंगे तो इसको करेंगे. The narratives of silence was seen, narratives of ongoing suffering, but at the same time their participants, I mean जिसको रिसर्च सब्जेक्ट्स उसने बनाया था, narratives of transformation, तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, and narratives of transcendence. Similarly, you read the work of Rhodes, Hine and Rhodes, जो 2011 में पब्लिश हुआ था. Why do people choose to become psychologists? A narrative inquiry. I mean, those who belong to the discipline of education, why don't you conduct? Why do people choose to become teachers? You know, people very simply say, oh, people become teachers because they had no choice to become anything else. It's not so simple, friend. We have to challenge the existing myths that's there. It's not so simple as people generalize the statement. You read this work, and he has given that how did he conducted this research. I mean, I mean, both the authors say that they develop an interview schedule, like their style is completely different. They collected the interviews, regular basis, extensive interviews. They transcribed the interview and read it through with the research questions in mind. And after reading it through the lenses of the research questions, they created the stories. And as I said, you read the work of Clandinin and Conley. Maybe in some, but yeah, whenever I'll organize, I don't know when, and on which platform and who will be the organizer, I don't know.
I'll give you at least 3 to 4 books, good books, not all books. Why you read so much? Uh, Read 2, 3 good books, and I'll give you some research paper, and then I'll ask you. You formulate your research problems, and then how research questions will be formulated, particularly in the qualitative and interpretive paradigm. But when we are committed to use inquiry, narrative inquiry mode of uh, research methodology. And then it could be, I think, 2 3 days it will take, right? So I would like to stop. Thanks to all. There are so many things. I'm sorry I have made my presentation related to narrative inquiry very short, because I had to cover the earlier presentation also, friends. So I stop here today. Uh, what to do? I have no problem. I can take a few questions. All right. I don't know what's there in the schedule, but tomorrow I'll talk. But yes, I'm happy to note that. You don't worry. Whenever we'll have opportunity to to come together again to learn narrative inquiry. Uh, some very good book, like one author, whose work really influenced me a lot. Understanding Narrative Inquiry by Jeong Hee Kim. And she has written very fantastically. And there are others also, but Conley, I really admire him. And there are n number of. There is a special journal, friends, in the name of Narrative Inquiry. And if you, but that's very costly. For one article, you will have to pay at least $35, sometimes in pound. I know that. And there are, I am acquainted with at least 10 journals in that field. But unfortunately, in India, why it is not becoming? Because I think still we are under the dominance of positivist paradigm, fully conscious of that that paradigm is not suitable to understand and capture the essence of human the essence of human experience and human life, educationally particularly, right? But anyway, we are doing then. There is a so and there is another very famous book that I like the most. Routledge published uh, narrative inquiry in like some people I know, they have used this research methodology for the teaching learning, language teaching and learning also. That's also a good book. uh, Many things. It depends. If you are really committed, you want to know more and more, definitely you'll find something. But fortunately, I have been doing this since last 1 decade. Uh, so I have collection. But anyway, that's not an issue. Issue is that how do I present the ideas, whatever I have read, whatever I have understood. That's more important. आप अपनी कहानी आप ही लिखते हैं, और आपका जीवन आपकी कहानी है, उसके अलावा कुछ और नहीं है. उस कहानी के उन एपिसोड्स को देखें, तो कल जो एपिसोड हुआ उसके आधार पे आने वाले कल का एपिसोड सुनहरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन एपिसोड्स इंपॉर्टेंट हैं. उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है. नैरेटिव इंक्वायरी उसको कैप्चर करता है. एनीवे, आई स्टॉप हियर. इट्स ओवर टू डॉक्टर प्रमोद गुप्ता. many thanks to you sir. और आज हम सभी आपके इस उद्बोधन से बहुत ही लाभान्वित हुए. बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी की अपनी अपनी एक कहानी होती है. जिस तरह से सभी का अपना एक अलग थंब इम्प्रेशन है, उसी तरह से एक हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है, और हर व्यक्ति से एक नैरेटिव इंक्वायरी जन्म ले सकती है. और निसंदेह हम अगले प्रोग्राम्स में जो हमारे डे बाय डे के टॉपिक्स हैं, हम एक टॉपिक को लेके एक वर्कशॉप करेंगे 5-5 6-6 दिनों का. और निसंदेह हम आपका और भी समय लेंगे. many thanks to you sir. We will meet again tomorrow. Thank you. Many thanks to all learners. Thank you so much.